हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय भट्ट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तन्मय भट्ट। दोस्तों, हमने सी लैंग्वेज के पार्ट 17 में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैसे स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है, कैसे उसको फंक्शन में, मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जाता है, उन सब के बारे में हमने देखा था। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले यूनियन के बारे में, कि कैसे कि यूनियन को कैसे डिफाइन किया जाता है, उन सब के बारे में हम आज देखने वाले हैं। A union is a special data type, variable in C that allows to store different data types in the same memory location. You can define a union with many members, but only one member can contain a value at any given time. Unions provide an efficient way to using the same memory location for multiple purposes. अब दोस्तों हम बात करते हैं डिफाइनिंग अ यूनियन के बारे में। To define a union, you must use the union statement in the same way as you did while defining a structure. The union statement defines a new data type with more than one member for your program. The format of the union statement is as follows. Union square bracket के अंदर union tag member definition और one or more union variables हमें लिखना होगा. The union tag is optional and each member definition is a normal variable definition such as integer I or float f or any other valid variable definition at the end of the union's definition. Before the final semicolon, you can specify one or more union variables, but it is optional. Here is the way you would define a union type: name, data having three members I, f and structure. Union data integer I or float r or character string 20. Now a variable of data type can storage an integer, a floating pointer number or a string or character. It means a single variable, i.e. same memory location, can be used to store multiple types of data. You can use any built-in or user-defined data types inside a union based on your requirement. The memory occupied by a union will be large enough to hold the largest member of the union. For example, in the above example, data type will occupy 20 bytes of memory space because this is the maximum space which can be occupied by a character string. The following example displays the total memory size occupied by the above union. Has include stdi.h or has include string.h. Union data integer I, float r or character string 20. Integer main union data. Printf memory size occupied by data %d or /n. Size of और bracket के अंदर आएगा data और return 0. When the above code is compiled and execute, it produce the following result. अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सेसिंग यूनियन मेंबर्स के बारे में. टू एक्सेस एनी मेंबर्स ऑफ अ यूनियन वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द यूनियन वेरिएबल नेम एंड द यूनियन मेंबर दैट we wish to access. You would use the keyword union to define variables of union type. The following example shows how to use union in a program. Has include stdi.h, has include string.h. Union data integer I, float r or character string 20. Integer main union data.i, print data.f 220.5 structure copy data.string C प्रोग्रामिंग और जो भी हमें प्रिंट कराना है वो data.i %n data i और data.f
%f/n data f, or printf data dot string %s or /n or data dot string return 0. Here we can see that the values of I and f members of union got corrupted because the final value assigned to the variable has occupied the memory location, and this is the reason that the value of string member is getting printed very well. Now let's look into the same example once again, where we will use one variable at a time, which is the main purpose of having unions. Here all the members are getting printed very well because one member is being used at a time. दोस्तों हमने आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने इस वीडियो में हमने बात की यूनियंस के बारे में। हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।